for meaningful parliamentary dialogue and exchanges as well as capacity building of parliamentarians. Resolved to augment interparliamentary cooperation through MOUs, joint committees, parliamentarians, caucuses, special forums for young parliamentarians, institutionalized partnership, and promotion of mutual understanding across diverse regions and political systems. Commit to supporting the ISC as a valuable forum for dialogue and the exchange of best practices among parliaments to address complex transnational issues including sustainable development, climate resilience, conflict resolutions, water, food and health security, while amplifying the voices of emerging economies to ensure equitable representation in shaping global cooperation. Underscore the critical role of parliamentary diplomacy in bridging divides, preventing conflict, fostering people-centric development, and reinforcing multilateralism as the foundation for more just and peaceful international order. Ensuring peace through dialogue and cooperation. Emphasize that sustainable development is unattainable without enduring peace, and that peace itself cannot be realized with justice, equality, and inclusive and sustainable socio-economic growth that leaves no one behind. Affirm the vital role of parliaments in upholding the principles of international law, advancing human rights, and supporting the legitimate aspiration of the people to live in security, dignity, and freedom. Endorse parliamentary initiatives that promote the peaceful resolutions of long-standing disputes, reinforce the rule of law, and prioritize dialogue over unilateralism, accord over discord, and partnership over conflicts. Promote reconciliation, mediation, and proactive parliamentary diplomacy as essential tools for building trust, bridging political and cultural divides, and de-escalating tensions. Encourage stronger parliamentary cooperation to tackle the underlying drivers of instability, such as poverty, exclusion, climate stress, and protracted regional disputes through dialogue, consensus building, and sustainable development approaches that uphold stability, equality, and mutual respect among nations. 3. Advancing equitable and sustainable development. Commit to legislation and monitoring national and regional development agendas aligned with 2030 Sustainable Development Goals, SDGs, that effectively bridge social and economic inequalities. Contribute to the economic and social empowerment of vulnerable and underserved communities with a particular focus on women, youth, differently abled persons, and those in underdeveloped regions. Support inclusive and forward-looking development agendas that are climate resilient, environmentally sustainable, and driven by equitable access to innovation, technology, and digital infrastructure. Strive to close the digital divide and leverage innovation to improve public service delivery and economic inclusion. Promote national and international e-parliament platforms that enable secure real-time digital engagement with citizens
and Development AI governance framework grounded in principles of fairness, transparency, and accountability, ensuring that the technological advancements serves the well-being of all our people and respects fundamental rights. Prioritize international capacity building within parliaments to strengthen legislative oversight, role of parliamentary caucuses, special and standing committees in ensuring transparency, inclusion and accountability in development processes, and upholding principles of responsible, participatory, and people-centered governance. Bilateral and multilateral cooperation, inclusive international partnerships, and multi-stakeholder mediation approaches that give primacy to citizen protection and human security. Promote policies that advocate fair, equitable, adequate, and accessible climate financing in line with the principle of common but differentiated responsibility and respective capability, CBDR, RC addressing inflation and debt crisis in developing countries and ensuring that no nation is left behind in the pursuit of global resilience and progress. Promote sustained investment in education, scientific research, and innovation as critical pillars for building knowledge-based, adaptive, and resilient societies capable of withstanding current and future crises. Fifth, fostering regional stability, integration, emphasize the need to promote inclusive, transparent, and mutually beneficial infrastructure and connectivity initiatives that foster regional cohesion, enhance people-to-people exchanges, and contribute to collective prosperity. Encourage national parliaments to lead a crafting trust-building measures, harmonizing legal framework, and fostering interparliamentary cooperation to diffuse tensions, deepen mutual respect, and support long-term stability across regions. Reaffirm the value of parliamentary diplomacy, dialogue, and non-interference in internal affairs of state as cornerstones of peaceful coexistence and regional development. Conclusion, as we close the inaugural meeting of this August forum and adopt the historic Islamabad communique on 12th November 2025, we look toward a future where parliaments lead from front, inspiring action, building trust, deepening cooperation. We shall be guided by the enduring principles enshrined in United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. We reaffirm our collective responsibility to uphold peace, advance security, and foster sustainable development to build a world what is just, inclusive, and prosperous for all. Thank you once again for your invaluable partnership in this defining endeavor. इस्लामाबाद में इंटर पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी बदस्तूर बड़ा ख़तरा है। हम दुनिया में होने वाली हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और लाइफस्टाइल पे अप टू 90% ऑफ। द बिग बॉस ऑफ 11/11। गिरो उठो ट्राई, फिर से गिरो उठो ट्राई, गिरो उठो ट्राई, फिर से गिरो उठो ट्राई। धोएं? इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये इन सिद्धि गहरे दागों को भी कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना।
सेंसोडाइन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट में नोवोमिन है जो सेंसिटिव टीथ को 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रिपेयर करता है। ये दांतों के सेंसिटिव एरियाज को टारगेट करके एक टूथ लाइक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। इट जस्ट वर्क्स। या सलाम, मोगर मशा लजीजा वन्नका अरबिया असीला। So crunchy, fully infused with flavor. Sobroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. बस एक साशे नेस्कैफे में ऐड करो गर्म पानी, फिर दूध और चीनी और बन गई 30 रुपए में ग्रेट टेस्टिंग कॉफी। नेस्कैफे, बनाओ अपनी दुनिया। हर साल की तरह एक बार फिर हजारों स्टूडेंट्स करेंगे अपने मुस्तकबिल का फैसला। डॉन एजुकेशन एक्सपो पिछले 20 सालों से कर रहा है इस मुश्किल फैसले में आपकी मदद, जहां मिले दुनिया के तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदे और स्कॉलरशिप्स के मुतालिक करियर एडवाइस, AI, गेम्स, बायोटेक, आर्ट्स। आपके ऑप्शंस क्या हैं? अब करियर का फैसला हुआ आसान। डॉन एजुकेशन एक्सपो 2025, कराची नवंबर 15 और 16, इस्लामाबाद नवंबर 20, लाहौर नवंबर 22 और 23। इवेंट में शमूलियत बिल्कुल मुफ्त। तफसीलात के लिए विजिट करें educationexpo.don.com या फॉलो करें @DonEducationExpo। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। Sobroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। जोंग के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। ग्लूको, जिसमें है गंदम और मक्खन की ग़िज़ायत और कैल्शियम जो बनाए तुम्हें स्ट्रॉन्ग। इस्लामाबाद में सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो से शख्सियात से मुतालिक कानून साजी की हिमायत पर सवाल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी जवाब दिए बगैर गुजर गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को मुज़ाकरात में फिर सहूलतकारी की पेशकश कर दी, कहा मामलात का हल निकालने के लिए ऐवान में बैठना ही पड़ेगा। मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात, चेयरमैन PCB ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। और मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में पुराने कपड़ों के गोदाम में आग भड़क उठी, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। So crunchy, fully infused with flavor. For the first time in Pakistan, Sobroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. जोंग के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई, गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई। धोएं? इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये इन सिद्धी गहरे दागों को भी कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। सबका दिल खुशी से भरने के लिए खुशी का एक्सपर्ट बनना पड़ता है, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ नेस्ले मिल्क पैक, जिसने पाकिस्तान में मयारी दूध का आगाज करके अपने क्रीमी और मजेदार साइकिल के साथ जिंदगी का मजा बढ़ाया। फार्म से आप तक ग़िज़ायत पहुंचाए, पाकिस्तान का डेयरी एक्सपर्ट नेस्ले मिल्क पैक। अब हर दिन खुशी से फ्रॉम नेस्ले। जैज़ कैश ऐप से गेम अप कर, आसान से चैलेंजेस